Hi, so this is the end of 26th of July. आज जो मार्केट तो बहुत इंटरेस्टिंग थी. There were a lot of trades which were taken. A lot of results came out. So one of the very few companies जैसे Coromandel was one of the very good trades. ये यहाँ पे हमने पहले भी डिस्कस किया था Coromandel with 900 as a very strong resistance levels. So Coromandel में अभी हम देख रहे हैं कि ये धीरे धीरे ट्रेंड में आ रही है. We were talking about reversal from this day onwards. और आप देख सकते हो कि 850 से ये 900 प्लस चली गई है. सो गोइंग फॉरवर्ड कोरोमंडल इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अ वेरी गुड लॉन्ग कैंडिडेट. Before I continue anymore, I am going to post a video explicitly on the levels of for Tata Motors. और उसके बारे में मैं इसके एक डिफरेंट वीडियो पे बात करूंगा. सो आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट टाटा मोटर्स. सिमिलरली यू कैन सी देयर वर लॉट ऑफ पोजीशंस एडेड इन एसबीआई लाइफ एंड एसबीआई लाइफ मेड एन ऑल टाइम हाई. हम लोग यहाँ पे इस दिन से हम लोग रिवर्सल की बात कर रहे थे एंड नाउ यू कैन सी दैट दिस गेव अस अ वेरी गुड नियर अबाउट नियर अबाउट 10% मूव टुडे. So is also true for Apollo Hospital. हमने Apollo Hospital पे भी हमने बहुत discussions की थी and this was also traded and closed at all time high. So as a result of which you can see that from the breadth of the market there are a lot of ऑप्शंस आउट देयर टू ट्रेड. हमने जैसे सुबह सेल में पोजीशन लिया था 128 में और ये 130.98 ऐसे कहीं तक गई थी. सो दिस वाज आल्सो गेव अस अ वेरी गुड 2-3% ऑफ अ मूव. दिस इज आल्सो ट्रू फॉर कंपनी लाइक मेट्रोपोलिस. यू कैन सी मेट्रोपोलिस हम लोग डिस्कस कर रहे थे थ्रू अ लॉट ऑफ सेशंस. ये अभी 2800 को होल्ड कर रही है एंड टुडे इट वाज ट्राइंग टू गो टुवर्ड्स 3000 लेवल्स. So Metropolis in the coming days would definitely be a very good candidate. DIVISLAB also gave us a very good closing, but this result is it was a result day today. So basically, I will not be very much interested in DIVISLAB. सिमिलरली यू कैन सी हिंडाल्को भी हमने सुबह में मेंशन किया था. तब वो 394 में थी और माई टारगेट वॉज 400 प्लस नियर अबाउट 401 एंड दैट्स एग्जैक्टली वेयर इट वेंट टुवर्ड्स 402 और 3 402.5. एंड सो वॉज ऑल्सो ट्रू फॉर फेडरल बैंक. ये हमने कल ही डिस्कस किया था कि दिस वॉज एक्चुअली लुकिंग रियली गुड फॉर रिवर्सल from here you can see that हमारे जितने भी ऊपर में क्वाड्रेंट में है बजाज फिनसर्व मेड एन ऑल टाइम हाई एंड सो इस ये भी जितने भी ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं दे आर ऑल शोकेसिंग अ रियली गुड स्ट्रेंथ. आज मार्केट में टाटा स्टील वाज आल्सो दिस वाज डिस्कस्ड अराउंड अबाउट एट 10 o'clock इन द मॉर्निंग. हमने टाटा स्टील को भी पकड़ा. वो भी ऑल टाइम हाई पे गई थी 1300 लेवल्स. सो in general the whole of the steel sector is looking good. और going forward हम इसमें भी देखेंगे कि just like here you can see that so all our targets and all our this counters जो भी हम लोग select किए थे we were lucky. Similarly PVR पे मैंने सुबह 10 बजे ट्वीट किया था 1400 पे और वहाँ से it gave a closing near about 1340 levels. So this is also something of a very good short trade. So it's not only that you have to always think about long, you also have to understand that expiry में कुछ levels violate होने नहीं देंगे और आपको वो once you have that information that's going to help you a lot in your trading styles. Similarly we can see Jindal Steel is looking weak. It opened up with a gap up but still it was not able to hold those levels and so as a result of which you can see that there were a lot of companies out there जिसमें बहुत सारी trading opportunities थी. जैसे ब्रिटानिया हम लोग बोले थे कि जब तक ये 3500 के ऊपर closing नहीं देगी I'm not interested and this is exactly going it went towards 3498. So these levels are very important and once you know these levels then you can effectively trade. Say for example आज जो मैंने ये इस पे ट्रेड लिया तो यहाँ पे अगर आप देखते हो so all of these candles so they were all small candles who were actually waiting for a reversal. और ये हम लोग ब्रिटानिया का रिवर्सल we were talking from these days. यहाँ से हम लोग रिवर्सल की बात कर रहे थे and we were waiting for a closing above 3500.
Fortunately that didn't unfortunately that didn't come today, but definitely going forward Britannia is looking like a very good candidate, जिसमें हम लोग और भी ट्रेड लेंगे. और यहाँ पे ट्रेड लेने का एक ही कॉन्सेप्ट था कि ये धीरे धीरे करके एक रिवर्सल पैटर्न बना रही थी, और यहाँ पे हमारा 3470 लेवल्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जोन था. तो जब ये 3470 क्रॉस किया, आई वेंट अहेड एंड सोल्ड 3400 put aggressively. And so even if the stock didn't move, still from expiry point of view and from the time taker point of view, you are able to get some good sort of intraday money. So यही कुछ concepts होते हैं जो आप you can use especially when the expiry is so near. एंड फ्रॉम रिवर्सल कैंडिडेट ये कैनरा बैंक का भी जो डाउन ट्रेंड था वो धीरे धीरे वीक हो रही है. वी हैव टू सी इफ इट इज़ एबल टू मूव अबव 150 लेवल्स. एसीएल टेक भी 1000 लेवल्स को क्लोज करने की कोशिश कर रही है, बट अगेन दिस it looks really weak, and as of the data which I have right now. TVS Motor bhi you can see there was a long downturn from the starting of this month, and so it has been in a downtrend. अभी लग रहा है कि इसमें भी एक रिवर्सल आ सकती है, and this is also true for a few of the other auto companies that we are going to see later on. India Bull Housing Finance, it gave a good run in the morning, and then you can see there was a sell-off. जो भी कंपनीज का रिजल्ट रिलेटेड मूव्स होती हैं उनमें जनरली मैं उतना पोजीशंस बनाता नहीं हूँ, बिकॉज whenever you are creating a position you should always have a stop loss. Even if you are in cash, say for example, and on the top of that, India Bull Housing Finance is not one of the companies जिसमें मैं cash invested रहना चाहता हूँ. These are all just trading purposes. So when I'm trading and when I'm deploying my intraday capital, so उसमें एक stop loss होती है, and because of result move, any erratic move, whether in the positive side or the negative side, the chances are very high that it will eat up and trigger my stop loss. So मैं generally in trade से दूर रहता हूँ, just like I was carrying a state SBI Life since the last 2-3 सेशंस. SBI लाइफ का रिवर्सल के बारे में हमने एक वीडियो बनाया था, अगर आप मेरे चैनल में जाके प्रीवियस वीडियोस में देखते हो, और मैं उसके बारे में एक्सप्लिसिट एक ट्वीट भी किया था, बिकॉज दैट वाज एक्चुअली लुकिंग रियली गुड. और मैंने SBI कार्ड के रिवर्सल पे भी वीडियो बनाया था, जस्ट एज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, जस्ट इस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ, और उसने भी आज बहुत अच्छी एक मूव दी है. एंड सो आई ऑलवेज कीप ऑन अपडेटिंग ऑल दिस इन्फॉर्मेशन इन माई वीडियोज़. एंड सो इफ समवन वुड हैव, अगर वो वीडियो अगर देखे हो तो उसमें आप देखोगे कि राउंड अबाउट 3-4 सेशंस अगो हमने SBI लाइफ पे पोजीशंस बनाए थे. आज रिजल्ट मूव था तो ऑब्वियसली वी ऑलवेज ट्रेल आवर प्रॉफिट्स, बट सिंस आवर पोजीशन वाज फ्रॉम 3-4 days ago, so we were already sitting in good profit, nice 5%, just like SBI card में मैंने I booked out at 1008 at a 5%, which is a very good swing trade for me for 2-3 sessions. और well, I'm digressing, sorry, लेकिन मैं वही बोलना चाहता हूँ कि you also always have to think in swing trade that you have to catch a trade as and when it's going to reverse, and this has always been why you need a explicit understanding of how the market is behaving and how the money is flowing from one sector to another. Regarding Godrej consumer products, there was a very explicit question asked by someone in Twitter, and if you're the person, so basically Godrej consumer products is actually one of the very good companies is out there. We are definitely not looking for creating shorts. This is, you can see higher high, higher low. Until and unless it goes below 950 closing, I would definitely not be interested in shorting this. And going forward, we also do know that the results of this counter is due in this week itself, and if I'm not wrong, just a moment, then it should be coming in the next 2-3 days. So going forward, you should never be shorting counters जिसके results अभी just post होने वाले हैं. Let the company post result, let it be a bad result, and then eventually we would be taking our positions, and especially
from a sectorial perspective, I would never go and short FMCG sector in this week. There are a lot of big names जो अभी result post करने वाले हैं इस week में, just like Marico, Dabur, Britannia, and this will at least have money inflow and outflow from FMCG counter. अगर इस दौरान अगर आप गलती से भी इन सब कंपनीज में ट्रेंड के अगेंस्ट चले गए, so theoretically then you would have to pay the price for it. और एक सेकंड, just a moment, I don't know when actually this Godrej Consumer Products is going to post the result. So theoretically, I'm sorry, I used to have this information, but right now I'm not able to get hold of it. लेकिन जो भी है, theoretically from a very chart perspective you can see of course the trend is getting weaker. ये ऊपर में जाके अभी थोड़ा सा profit booking हो रही है, but that doesn't mean that you are going to go ahead and create shorts. That would be a really bad decision. So no matter what, you should always try to look into again Coalpal is also going to post results on 29th of this month, within 2-3 days. So theoretically you should never be trying to short companies like this here. And I'm going to make an explicit video about Tata Motors. This was also another question which was asked, and this will get I will create this video after this. And so the next company which was also was asked about was Emphasis. Of course a company अगर वो all time high पे है और अच्छी trade कर रही है, so your strategy should be buying in dips rather than shorting that company. Of course every day these companies are not going to run, that is a known fact, but what you have to do is you have to find those particular days in which it's weak and try to accumulate them in small quantities. Normally मैं एक अच्छी कंपनी जो अच्छी रिजल्ट दी है, मैं उनको अगर बाई करता हूँ तो मैं उनमें स्टॉप लॉस बहुत डीप होता है मेरा, because whenever I'm buying which I often tweet as SIP, this is something which I actually invest with a mentality कि ये पैसा मैं 6 महीने के लिए अगर अटक भी गई तो I have no problem with it. On the top of that, अगर कोई weakness आती है, so I always hedge myself with some option positions. Just for example, कोई भी अगर मैं फॉर एग्जांपल आज मैं टोरेंट फार्मा में पोजीशंस बनाया, राइट, एंड बट आई आल्सो वेंट अहेड एंड सोल्ड 3200 कॉल्स, राइट, सो इक्विवेलेंट लॉट, सो इट्स एब्सोल्युटली ऑलवेज हेज्ड पोजीशंस मेरे में रहती हैं. एंड इवन इफ टोरेंट फार्मा इज एबल टू क्रॉस 3200, दैट वोंट बी अ प्रॉब्लम, बिकॉज फिर मेरे जो कैश होल्डिंग्स हैं जो मैं अभी 3000 लेवल्स से कैरी कर रहा हूँ या उसके नीचे से कैरी कर रहा हूँ, so I will be always in be profit. So from a weakness perspective, I think Glenmark is looking weak and there is more scope of a downturn, and Navin Florin also maybe posted his results, or maybe he is going to post his Navin Florin ने अपना result post किया है. So basically so you see there is more weakness in Navin Florin. M&M Finance is one of the companies you should always stay away from. इसके बारे में मैंने वीकेंड में एक वीडियो बनाया था, एंड वी ऑलरेडी न्यू दैट देयर इज़ अ लॉट ऑफ पोजीशंस गेटिंग क्रिएटेड इन द शॉर्ट साइड. हमने ग्लेनमार्क के बारे में भी बोला था, GMR इंफ्रा के बारे में भी बोला था, ICICI GI के बारे में बोला था, LIC हाउसिंग फाइनेंस के बारे में बोला था. दैट वीडियो यू विल फाइंड इट इन माई चैनल, और इसको मैंने कल रात को ही पोस्ट किया था. So all the 5-6 counters जिसमें मैं वीक बोला था, they all ended in deep red, and they were all very good short trades. So you always have to do this analysis on your own, or you can use my video to find out the stocks, and then use your charts to validate, and then you should be taking out the trades. So in general, just as a quick summary, I think Emphasis is also looking really good. This is a very bullish structure. Gap up हुई थी, फिर यहाँ से एक doji बनी, and now it's able to it's trying to eat that particular body. Today there was a good body formed. Of course expiry है 2-3 दिन में, so there can be an expiry related move. Emphasis ने बहुत अच्छी result post की है, but no matter what, don't even think of shorting it. Rather try to buy in dips, or theoretically your stop loss should be around about 2250. एंड वी 2500 आज हमने एम्फेसिस भी हमने डिस्कस किया था वीकेंड के प्री ओपन वॉच में. आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाके ट्राई टू लुक इनटू द वीडियोस विच आई पोस्टेड येस्टरडे,
on 25th of July, and you will find all the weak counters I talked about and also all the strong counters. Hope this video is going to help you in finding your next trade. Best of luck. I will post an explicit video on Tata Motors just after this, and best of luck with your trading. The market is looking good. Let's hope for the best. Bye bye.